A very good morning, dear student. My dear student, as you know that at present source of business finance chapter is going on in business studies class 11th. This is chapter number 7. My dear student, in today's assignment, we will study the sources of raising finance. If you want to raise the finance, then you have the two sources. Number one is the honor fund, and number second is, my dear student, is a borrowed fund. My dear student, there are the many sources. If honor fund, these are the sources in honor fund, and if we are choosing the borrowed fund, these are the options of the borrowed fund. And my dear student, these all options we will study in detail in next assignment. My dear student, first of all we will start with honor fund, and first of all we will start equity shares and preference shares. These two topics today we will cover, my dear student. Now we will come here. Yes, issue of shares, and we can say honors fund, long term source of finance. My dear student, if you are raising the fund from share, then definitely this is an honor fund, and this is a long term source of finance. This is a long term source of finance. My dear student, there are the two types of shares: equity shares, and then you can see here these are the preference shares. There are the two types of shares. My dear student, what is meaning of shares? First of all, we will discuss about it. What is the meaning of shares? Shares means a part. Share means a part. जैसे कि आपने सुना होगा कि भाई हम थोड़ा सा शेयर मुझे मिल जाएगा, थोड़ा सा शेयर तुम ले लोगे. स्टूडेंट्स जो होते हैं, जो फ्रेंड्स होते हैं, वो आपस में चीज़ें को क्या करते हैं, शेयर करते हैं. यस माय डियर स्टूडेंट, सेम स्पेलिंग, सेम वर्ड, सेम प्रोनाउंसिएशन, एवरीथिंग इज सेम. शेयर. So today we will learn share. Share means a part. Company sells his shares, his part to general public. और जनरल पब्लिक से वो कहती है कि प्लीज़ कम and please, at present I am ready to sell my shares, part of the organization of the business of my company. I want to sell the part of my company. Company is saying like this, and general public is purchasing the share. If general public is purchasing the share, अगर जनरल पब्लिक ने शेयर खरीदा है, तो माय डियर स्टूडेंट उसने उस कंपनी का एक हिस्सा खरीद लिया, उसका एक पार्ट खरीद लिया. इसका मतलब अगर उसने एक पार्ट खरीद लिया, एक हिस्सा खरीद लिया, तो डेफिनेटली वो बनेगा शेयर होल्डर, एंड शेयर होल्डर इज अ ऑनर ऑफ अ कंपनी. शेयर होल्डर इज अ ऑनर ऑफ कंपनी. बट माय डियर स्टूडेंट, नाउ यू विल थिंक इफ शेयर होल्डर इज अ ऑनर ऑफ अ कंपनी, तो मुकेश अंबानी, अनिल अंबानी, दीज आर द ऑनर ऑफ द रिलायंस इंडस्ट्री, दीज आर कंपनी. तो वो कौन है? माय डियर स्टूडेंट, मुकेश अंबानी, अनिल अंबानी, दे ऑल आर द शेयर होल्डर. ये सब शेयर होल्डर हैं. बट माय डियर स्टूडेंट, सपोज वी वांट टू स्टार्ट अ कंपनी, और कंपनी को स्टार्ट करने के लिए हमें 500 करोड़ की ज़रूरत है. वी रिक्वायर्ड 500 करोड़ रुपीज़ टू स्टार्ट अ कंपनी. सपोज मुकेश अंबानी, अनिल अंबानी, दे हैव 300 करोड़ रुपीज़, बट दे डोंट हैव द 200 करोड़ रुपीज़. तो माय डियर स्टूडेंट, फर्स्ट ऑफ ऑल मुकेश अंबानी, अनिल अंबानी जो मेन ऑनर हैं, मेन डायरेक्टर्स हैं, फर्स्ट ऑफ ऑल दे विल परचेज द कंपनी शेयर, एंड फर्स्ट शेयर होल्डर विल बी द मुकेश अंबानी एंड अनिल अंबानी, क्योंकि उन्होंने सबसे ज़्यादा शेयर खरीदे हैं. बिकॉज ऑफ दिस दे आर लीडिंग द कंपनी. बट माय डियर स्टूडेंट, एट प्रेजेंट 200 करोड़ रुपीज़ दे डोंट हैव. तो दे विल इशू द शेयर इन द मार्केट. मार्केट में वो शेयर इशू करेंगे और लोगों से कहेंगे प्लीज़ कम एंड प्लीज़ परचेज माई कंपनी शेयर. हमारे कंपनी के शेयर खरीदिए, हमारे शेयर को खरीदिए, हिस्सा खरीदिए, पार्ट खरीदिए, और ऑनर बन जाइए. तो माय डियर स्टूडेंट, जब जनरल पब्लिक खरीदती है इन शेयर्स को, तो डेफिनेटली वो ऑनर बनती है, और जब वो ऑनर बन जाती है, वो शेयर होल्डर होती है, तो वो ऑनर हो जाती है. बट वो कंपनी को लीड नहीं कर सकते. दे कांट लीड द कंपनी, बिकॉज जिसके पास मैक्सिमम शेयर्स हैं वही कंपनी को लीड कर सकता है. इसलिए मुकेश अंबानी इज़ द ऑनर ऑफ अ कंपनी because they are the shareholder, or you can say that we can purchase the shares of the market.
फ्रॉम द मार्केट। हम भी शेयर होल्डर हो सकते हैं, बट वी हैव द मिनिमम शेयर्स, दैट्स वाई वी आर नॉट लीडिंग द कंपनी। बट जो ऑनर्स हैं जो लीड कर रहे हैं, दे हैव द मैक्सिमम शेयर्स ऑफ दिस कंपनी, दैट्स वाई दे आर लीडिंग द, ओनली दिस इज डिफरेंस। तो माय डियर स्टूडेंट, ऑल शेयर होल्डर इज द ऑनर ऑफ अ कंपनी। So issue of shares, first of all we have to issue the share in the market, then we will collect the capital from the market. That's why we can say this is a honor fund and this is a long term source of finance, my dear student. But my dear student, there are the two types of shares. Number one is the equity shares, number second is the preference share. My dear student, equity shareholder are the main owner of a company, but preference shareholder is not a main owner of a company. My dear student, what's a preference share? प्रेफरेंस वर्ड से ही पता चलता है। प्रेफरेंस का मतलब होता है किसी को फर्स्ट प्लेस दे देना, प्रेफर करना। तो जैसे हम कहते हैं कि भाई पहले आप ले लीजिए, पहले आप करिए, प्लीज़ फर्स्ट यू, इसमें वी आर गिविंग द प्रेफरेंस। तो प्रेफरेंस शेयर होल्डर को प्रेफरेंस मिलती है किस चीज़ में? अगर उन्हें बिजनेस बंद होता है, ख़त्म होता है, कंपनी ख़त्म होती है, तो फर्स्ट ऑफ ऑल इनको रीपेमेंट कर दिया जाता है इक्विटी से पहले। प्रेफरेंस को पहले रीपेमेंट किया जाएगा। और जो एक प्रॉफिट होता है, तो पहले फर्स्ट ऑफ ऑल कंपनी विल गिव द प्रॉफिट टू प्रेफरेंस शेयर होल्डर, और इसके बाद जो बचेगा देन इक्विटी शेयर होल्डर विल डिस्ट्रीब्यूट। तो एंड में इक्विटी शेयर होल्डर लेंगे। दैट्स वाई इक्विटी शेयर होल्डर आर द मेन ऑनर, बिकॉज ये एंड में ले रहे हैं। एंड प्रेफरेंस शेयर होल्डर आर नॉट अ मेन ऑनर, बिकॉज इनको प्रेफरेंस मिली है। जिनको प्रेफरेंस मिलती है वो ऑनर नहीं होते हैं, और जो एंड में जो बचता है, जो सब कुछ लेता है, दैट वही मेन ऑनर होता है। दैट्स वाई equity shareholder are the main owner of a company and preference shareholder are not a main owner company. My dear student, I hope you understood this concept. Thank you very much.